का टू बी स्क्रीन दिसत आहे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you for your response. Okay. Let's see the coordination chemistry and Warner, as per I taught you in the last lecture, is a father of coordination chemistry. Okay, and some background we already learned in the last lecture, and also studied about the double salt. Double salt is very simply it formed by the combination of the two salt material, and it gives a new compound. They having the two salt combined. Okay, so such a type of salt is called as a double salt. Double salt means there is a two salt is there. Okay, so there is a simple bonding between to this salt, but when you ionize this salt, so it is completely ionized. For example, you see here there is a more salt is here. This one FeSO4. Okay, more salt simply known as to be the ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate. Okay, so this ferrous ammonium sulfate when dissolved into the specific solvent, so this ferrous ammonium sulfate is completely ionized and it gives the all the iron into the solution. Okay, means FeS. Okay, ferrous Fa ferrous ammonium sulfate FAS. Okay, so Fe is for the ferrous means Fe2 positive, then ammonium means NH4 positive, and SO4 is a negative. Okay, so in this way, if you make ionize to the more salt into the solution, so you will see there is a 3 ion is formed from the more salt. Okay, so one ion is for the Fe, one is for the Fe, that is Fe2 positive, and for the ammonium there is a NH4 positive, and there is a 2 for the SO4 negative. Okay, so similarly for the potassium, this one another double salt is there, and you can see in this salt there is one potassium sulfate and the ammonium sulfate in the hydrate form. Okay, so this potash alum, you can see when dissolved into the particular solvent, so it completely ionizes and it gives K positive. There's the potassium is a separately gives the ion K positive. Then SO4 in the salt, there is the SO4 2 negative. From this, there is the SO4 negative. Means you can see in the solution there is a SO4 negative ion, then K positive ion, and aluminum is also gives the 3 positive ion. So means you can simply see here this potash alum when dissolved into the solution in the solvent. So in solution you will see the complete ionization of this salt. Okay, similarly, one other example for the double salt is the kernelite. Kernelite is okay. So there is the potassium chloride and magnesium chloride with the hydrate form. Okay, so there is a double salt. One is KCl, is the one of the salt, and second one is the MgCl2. So these two salt are combined and given the double salt. Okay, so this double salt when dissolved into particular solvent, so it ionizes, and during this ionization, it gives one ion for the potassium, K positive, one ion for the Mg2 positive, for the magnesium, and then this two chlorine is there. So this chlorine negative, that is to be the chloride. Okay, so K positive, Mg2 positive, and chloride is there. Means in the solution, you will see there is the kernelite it gives the 3 ion, means there is a completely ionization of the salt. Okay, so this is the basic characteristic of the salt is there. When there is a combination of two salt, the compound is known as to be the double salt, or simply it is also called as to be the additional salt. Addition. Okay. Addition means there is simply addition of the two salted, so that's why it is called as to be the addition salt. Okay. And this double salt is soluble into the solvent and it gives the solution, but in the solution you will see there completely ionization of the salt. Okay. This is the characteristic for the double salt. So in example, we also see here, there's one example you can see there is a FeSO4 and this ammonium sulfate. So when it dissolves and it gives the ion, so you can see there is a Fe2 positive is formed, then ammonium ion is formed, and there is SO4 2 negative is also formed. Okay, so you can see this double salt. This is the double salt, and this double salt is completely ionized. Means this Fe you can see here, then SO4 you can see here, and then this is the ammonium also you can see here. Means this is the completely ionization is occur. So this is the characteristic of the double salt that we already learned into the last lecture. Now next is our interesting point and our main topic is a coordination compounds. Okay, so coordination compound we are going to learn in detail. So firstly we have to know
what is that? What is this concept? Coordination compound. So very simply is there is a metal ion interact with the ligand, produce coordination compound. So there is one example we can see here. This is the FeSO4 and KCH combine and form the K4FeCN6. So this will be the coordination compound. And I think we already learned this all concept into the last lecture. Also, here is a complex formation. So by visualization, we also understand how the complex is formed. Okay, so this is the copper and aqua molecule is there. Okay, this is the bluish is the aqua molecule. So this is the CO2 positive and there is 6 H2 molecule there. But there is a pinkish molecule you can see. Replace the bluish molecule and you will get this new complex compound. There is a copper and there is ammonium 4. That is this pinkish molecule is there. This is the ammonium 4 and 2H2O molecule. So this is the complex is formed. Very simply, you can be understand from this GIF. Okay. So this is visualization for the complex formation. So complex is very simple compounds is there. You can see there is a metal ion at the center of this molecule and there is a different type of ligand is substituted and from the bond with in between to the metal and ligand. So you can see there is a different metal and ligand bonding in the complex and all bondings are coordinate type of bonding. Okay. So this is to be the exact coordination compound. So simply you can be defined the interaction between to the metal ion and ligand and it form the ML coordination bond and this compound is known as to be the coordination compound. Okay, so at the center of the complex is the metal ion. So for the metal ion, that term is already learned in the last lecture. We just revised this all fastly. So there's the FeCN/6 4 negative is one of the complex and central metal ion. This concept you know that the metal ion present at the center of this complex. So there is a Fe is present at the center of this complex molecule. So this is the Fe2 positive is a central metal ion for this complex. Okay. Then another there is nickel S3/6 S3/6 2 positive is complex. Okay, and in this complex there is a nickel is a central metal ion because the metal ion is at the center of the complex. So this is the central metal ion. Okay, and now this complex, another example. So there is the cobalt and there is ammonia, NH3/4 and Cl2. So this amine and chloride, they are the two type of ligands in the complex, and this is to be the metal ion. This is the cobalt, and this cobalt present in the ionic form in the center of this complex. So it is called as central metal ion. Okay. Then ligand, this term you learned, this is very important in the coordination compound because if you see the coordination compound, so there are two entities. One is metal and another is a ligand. Okay, so metal we already learned in some previous slides. There is central metal ion. There is a different type of metal ion in a different type of complexes, and another species, another entity, another part of the coordination compound is a ligand. Okay, so ligand is very simply we can be defined. This is the group or atom surrounded to central metal ion. Okay, form a number of coordination bond with metal ion is known as ligand. Okay, मुझे मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में जितने ग्रुप और एटम्स होते हैं जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। तो इस तरह की जो भी एंटिटीज होती है, ग्रुप्स होता है या एटम होता है या मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसे हम लिगैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लिगैंड जो होता है क्लासिफाइड, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्लासिफिकेशन देखा था कि जिसमें जो क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयन है ना, किस तरह का आयन है, कैटायन है, एनायन है या न्यूट्रल है। तो ऑन बेस ऑफ दैट इट क्लासिफाइड इनटू द थ्री क्लास। फर्स्ट इज द एनायनिक लिगैंड। एनायनिक लिगैंड मींस देयर इज अ नेगेटिव चार्ज बेयरिंग स्पीशीज। ओके, जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है जैसे कि हाइड्रोक्सो है, ऑक्सालाइटो है, थायोसाइनेटो है। तो इस तरह के जो आयोनिक फॉर्म होते हैं, सो दे आर टू बी anionic ligands. Okay, because there is an anion. The second is the neutral. Neutral means there's the neutral molecule like amine and then H2O, then ethylenediamine, diethylene triamine. So such a type of the new molecule, they have one pair of electron or heteroatom, and this heteroatom donate this electron to the central metal ion from the metal ligand bond. So such a type of ligand is known as to be the neutral ligand. Okay. Then another class, there is a cationic ligand. You can see there are example is the hydrazine. Okay,
hydrogen is there, NH2 bond NH3 by NH3 positive. So this is the hydrogen, but there is a positive charge, so this is the hydrazinium ion. Hydrazinium ion. तो हाइड्रोजनियम जो होता है लास्ट में, दैट इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज बेरिंग स्पीशीज जो है वो लिगेंड तो यहाँ पे एक्ट हो रही है, बट प्रॉब्लम इज देयर इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी स्पीशीज के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन वो देने की बजाय वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इन सच ए केस इट कैन नॉट बी एक्ट एज अ गुड लिगैंड्स. Okay, so such a ligand is found in very rare. Okay, they very few type of ligand they attach to the cationic ligand, but mostly found anionic and neutral ligand in various coordination compound in the nature, and mostly organic, mostly the compounds are synthesized by using such type of the ligand. So here we have to be understand this concept is a ligand is very simply ग्रुप और एटम. ग्रुप और एटम ऐसे होते हैं कि जो लोन पेयर बेयर करते हैं या नेगेटिव चार्ज बेयर करते हैं, और वो जो है ये सेंट्रल मेटल एटम को आयन को जो है वो डोनेट कर देते हैं. तो इस तरह के जो भी ग्रुप और एटम्स होते हैं रिएक्ट विद द लिगैंड, वेरी सिंपल you can be defined. Then another classification already learned into the last lecture, but just revise another classification on the basis of the number of donating atoms. Okay, मतलब लिगैंड जो है इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, मेटल आयन को, और एज अ लिगैंड करके वो एक्ट होता है. बट वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करने की उसमें एटम्स कितने हैं डोनेट करने वाले, ठीक है ना, जिसे हम डोनेटिंग साइड भी कह सकते हैं या डोनेटिंग एटम्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इस on the base of that it classified into the different class, and we are going to be learn one by one. First is unidentate ligand. Unidentate ligand means uni means one, dentate that is the donating side. Okay, so only one donating side in the ligand molecule, so such a ligand molecule is known as to be the unidentate ligand. And the example you can see here, this is the unidentate means single donating atom is there only, or singly donating side in the ligand that donate the electron to the central metal ion and attach to the ligand. So this is the class of unidentate ligand. Okay, unidentate. So their example is a hydroxy. Look there, hydroxy. Okay, and there's a negative charge. Then another is a amine molecule. There is a lone pair of electron. Thiocyanate, the next two molecule. So if you see this all ligand, and you can see here there is only one donating atom in the molecule. Okay, so in hydroxy group you can see there is one oxygen atom is there, so this acts as the donating atom. In amine it acts as the nitrogen as a donating atom. In thiocyanate there is the negative charge on this sulfur is there, and in H2O molecule you can see the lone pair of electron on the oxygen. Okay, so this is all ligand having the only one donating sign, that's why it has a unidentate ligand. Okay, then bidentate ligand is there. This is the EN, ethylene diamine, oxalato. Okay, so the type of molecule you can see, this is the EN for the ethylene diamine. Already learned into the last lecture, but once again we remind. So you can see this is the ethylene, that is the CH2CH2, and then there two NH group at the end of ending carbon. So this is to be the NH2 NH2. Okay, this is to be the NH2. So this is the EN in ethylene, and this is to be the diamine. Two amine is there, so this is the diamine. So ethylene diamine molecule, that is to be the EN. Okay, and then oxalato, you can see there is oxalic acid, there is a CO and O negative. Then another carbon is there, also having a two oxygen along with one negative charge. So you can see again in the ion there is a, this is the one donating side, it has the negative charge. On the another side there is the donating atom is the oxygen. So total two donating side in the same ligand. So such a ligand is known as the bidentate ligand. Okay, this is the bidentate ligand. And this is the diamine molecule EN. So it also having NH2 at the one end and NH2 on the another end. Okay, so total two donating side is there. So that's why you can be put in this class is a bidentate ligand because of two donating side. The next one is tridentate ligand. Tridentate means there are three donating side is there. Okay, so example is a tri. Okay, example is a tri. So very simply there is a diethylene
and triamine molecule. Okay, triene means there are three amine group in this molecule, and this molecule donates the electron to the central metal ion and from the ligand bonding. And now you can see here there are three amine amine group. So nitrogen is there, and every nitrogen having a lone pair of electron, and that electron donated to the center metal ion, and it forms bond with the metal like this. This type of bonding is formed by this tridentate ligand, and it has to be the tridentate ligand because it's having three donating atom in the molecule. Okay, then another class. Okay, one by one you can be classified this ligands into the different class, but finally we can conclude it, included this all the polydentate ligand, all included into the polydentate ligand, because there is a number of ligand means after the bidentate means from the tridentate, tetradentate, pentadentate. So there is so long family is there, but we cannot be classified in a long way. We just classified from a monodentate, bidentate, unidentate, bidentate, and clearly to the polydentate ligand. Okay, polydentate ligand is simply there is a number of donating, more than 2 donating ligands is there, so they are classified into the polydentate ligand. So the best example is the EDTA. Okay, ethylene diamine tetraacetate. In the last lecture we already discussed their structure. Okay, EDTA. So next is the polydentate ligand. We are seeing here EDTA, that is the ethylene diamine tetraacetate. So you can see this is to the ethylene. Okay, and there are two amine means there are nitrogen is there. So this is to be the diamine, and tetra means 4 acetate is there. So this is to be the acetate group. So you can see in this molecule there is a ethylene, diamine, and tetraacetate. Okay, so total in this molecule you can see there are 6 donating atom in the molecule. Okay, there are tetra means this 4 acetate, 2, 3, and this one is a 4 acetate, and then fifth one is a nitrogen, and then sixth one is a nitrogen. So there are a total 6 donating atom, but it is put into the special class that is called as the polydentate ligands. Okay, that is very simple. And this polydentate ligand is able to form the 6 bond with the metal ion, central metal ion. So now you can see here there is a this is this nitrogen, this red color ball is the oxygen, this is the red color ball is ball. They are the oxygen of acetate. This is the oxygen. Okay, and this oxygen is indicated here by this red ball. Okay, so every this red ball is oxygen, and the donating atom, because it donates the electron, there is a negative charge of oxygen. So that negative charge is donated to this is cobalt, central metal ion, and blue ball indicates nitrogen, that is amine group. Okay, here this is also nitrogen, and this 2 nitrogen, this one is 5th and 6th position. So this nitrogen gives electron to this cobalt, central metal ion, and on the bond. Okay, so finally we can see this only one ligand molecule can be formed a 6 bond with the central metal ion. Okay, तो इस तरह से जो है पॉलीडेंटेड लिगैंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. देन एक इक्वली एक क्लास जो क्लासिफिकेशन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये जो मोनोडेंट है जो कि एक सिंगल वहाँ पे डोनेटिंग हमें देखने को मिलते हैं. तो ये पूरे जो जितने भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सभी एग्जांपल में हम देखेंगे कि एवरी एग्जांपल हैविंग द वन डोनेटिंग एटम दैट सिंपली नोन एज टू बी द मोनोडेंटेड लिगैंड. और that way you can be classified. Chaitali, if you have any question, you can ask me, but you mute yourself. Okay. So everyone audible to me? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. You understand what I'm told to you? Because कुछ समझता है ना? Hello? Hello, I am audible. Yes, sir. हाँ बेटा समझता है ना काय सांगत आहे ते? हाँ सर. ठीक है उस्मान समझ रहा है बेटा? Okay, so let's see, there is a bidentate ligand, another class. We already discussed this example is here, ethylene diamine, the structure for the ethylene diamine. Then bipyrimidine,
bipyrimidine, there are two pyrimidine bond to each other, so this is called a bipyrimidine. Then orthophenanthroline. So okay, every molecule you can see, every group you can see, this all ligand they having to be the two donating side. So that simply this is called as the bipyrimidine ligands. Okay. Then polydentate, there are a good example is a diethylene triamine, that is the trine molecule. Okay, ट्राइन है ना, ये एग्जांपल हमने देखा जो कि ट्राइडेंटेड लिगैंड में था। और हमने कहा है कि ये ज्यादा क्लासिफिकेशन करते रहेंगे तो बहुत सारा लंबा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, है ना, तो बस क्लासिफिकेशन ही पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होने को होना। तो क्या किया, टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस, इट क्लासिफाइड ओनली इन 3 क्लास, दैट इज मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड देन पॉलीडेंटेड। Okay, so polydentate class include the ligand having the more like 2 donating site. Okay, and from the tridentate, tetradentate, they all are included into the polydentate ligand. So the example is here, this is the diethylene triamine, then triphosphate. Okay, the triphosphate you can see here. Okay, this is another example for the polydentate ligand. And EDTA is the best, you know that very well about the polydentate ligand. And okay, this is the phosphate. Okay, then another class of the ligand is the chelating ligand. So already I told you in the last lecture, chelating ligand is a class of ligand, they having the two or more than 2 donating side in the same molecule, same ligand, and when it form the metal ligand bond with the central metal ion, so it form the ring-like structure. Okay, so such a ring-like structure is known as to be the chelating ligand. Okay, or this is simply called as a chelating agent. चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं या चिलेट लिगैंड भी कह सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में ही आपको कहा था कि हीमोग्लोबिन और अपना सेकंड वन इज द क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक रिंग बना देता है जिसे हम पॉर्फिन रिंग कहते हैं। ठीक है, बाद में हमने एक भी एग्जांपल देखा क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल में जो अगर हम देखते हैं तो ये जो लिगैंड है जैसे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है ना, तो ये पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो इसमें ये 4 यहाँ पे नाइट्रोजन जो है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं सेंट्रल मेटल आयन को। तो इसमें जो है ये हमें मैग्नीज यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन दिख रहा है। तो ये 4 लिगैंड जो है जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस मेटल आयन को, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे रिंग बन जाएंगे। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे बन रही है, ये वाली रिंग ना, इस तरह से रिंग यहाँ पे भी बन रही है, इस तरह से रिंग यहाँ पे बन रही है। तो ये जो काफी रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ हमें दिखा है, तो ये जो होता है, ये तरह का जो लिगैंड होता है, इसे हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलेटिंग एजेंट्स। ओके, देन अनदर क्लास ऑफ द लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, है ना। इसके बाद में और एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम लिगैंड को जो कि उसका बिहेवियर की तरह होता है इन द कॉम्प्लेक्स। तो ब्रिजिंग लिगैंड होता है एक ना, जिसे हम ब्रिजिंग लिगैंड कहते हैं, जो कि 2 मेटल आयन के बीच में एक ब्रिजिंग फॉर्म कर देता है। जैसे कि अगर डायमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, डायमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, वहां पे 2 मेटल आयन एक ही कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये जो 2 मतलब एक कोबाल्ट एक कॉम्प्लेक्स वाला और दूसरा कोबाल्ट ये अनदर मतलब मेटल, है ना, तो ये दोनों भी मेटल को जो है ये क्लोरीन है यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन से ये बाइंडिंग हो जाती है इसकी, तो ये जो है इस तरह से एक अलग कॉम्प्लेक्स तो बन ही जाता है, बट यहाँ पे बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये जो बॉन्डिंग है CO फिर से Cl के साथ में एक CO, तो ये जो Cl जो है बीच में, सो ये तो लिगैंड ही है, बट ये लिगैंड क्या कर रहा है, इट फॉर्म द ब्रिज इन बिटवीन द मेटल, ओके, इन द कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का जो लिगैंड होता है उसे हम ब्रिजिंग लिगैंड कहते हैं। ठीक है, और जब उसका नॉमेनक्लेचर होता है तो उस टाइम में हम उसके आगे ये इस तरह से म्यू लिख देते हैं, यानी कि हमें समझ में आए कि ये जो म्यू लिखा है मतलब ये जो लिगैंड है ये ब्रिजिंग लिगैंड है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इधर से म्यू निकालते वहां पे ड्रॉ करते हैं और उसके आगे लिखते हैं क्लोरो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो म्यू जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रिजिंग लिगैंड है, और वो जो लिगैंड है कौन सा है, तो फ्लोरो। तो ब्रिजिंग लिगैंड का ये कंसेप्ट होता है, तो इसे हम ब्रिजिंग लिगैंड भी कहते हैं। ठीक है, और होता है एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड, अब देखो एम्बिडेंटेड लिगैंड यानी तो हम किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे कि सेम लिगैंड हैविंग 2 डिफरेंट डोनेटिंग साइड। ओके, मतलब एक ही लिगैंड है बट उसकी डोनेटिंग साइड जो है वो
अलग अलग होती है। तो फॉर एग्जांपल के बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है, रेड कलर में हम दिख रहा है, जहाँ पे कोबाल्ट है और ये नाइट्रो ग्रुप है और एक यहाँ पे अमाइन ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉन्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे कोबाल्ट और ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ का मेटल आयन को, और यहाँ पे बॉन्डिंग, तो ये हुआ कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, उसी तरह का कॉम्प्लेक्स है, सेम है, बट यहाँ पे भी ये नाइट्रो ग्रुप हमें दिख रहा है ये वाला, बट यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये जो है ये कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप था, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप है, बट यहाँ पे जो लिंकेज बन रही है मेटल और लिगैंड के बीच में, ये डिफरेंट साइड की वजह से बन रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि सेम ligand having a different bonding site. Okay, so you can see here this is cobalt oxygen bonding and here cobalt nitrogen bonding in same molecule and same type of ligand is there but different type of donating site. So such type of ligand is known as to be the ambidented ligand. तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है इसको हम ambidented ligand यहाँ पे कहेंगे. Okay, then flexidented ligand. Okay, flexidented मतलब क्या होता है कि सेम ligand बट डिफरेंट नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट. यहाँ पे क्या था, डिफरेंट डोनेटिंग साइट थी, डिफरेंट डोनेटिंग साइट, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट, डिफरेंट नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट. ओके, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक लिगैंड, एक कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे, जिसमें ये जो यहाँ पे SO4 दिख रहा है, सल्फेट जो दिख रहा है, ये यहाँ पे CO के बीच में एक बॉन्डिंग है. CO मतलब कोबाल्ट है और ये सल्फर वाला ऑक्सीजन जो है ये एक इसके बीच में बॉन्ड है. ठीक है, मतलब एक ही बॉन्ड बना है. यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, सल्फेट है, बट यहाँ पे जो हमें कोबाल्ट और उसके साथ में 2 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है यहाँ पे देखने को मिलती है. ठीक है, मतलब लिगैंड तो एक ही है, SO4 है, सल्फेट है, बट यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी नंबर जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि डोनेटिंग साइड डिफरेंट है. अब ये स्ट्रक्चर में एक डोनेटिंग साइड है तो इसमें 2 डोनेटिंग साइड होती है, तो इस वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे 2 बॉन्ड बनता है, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड. ठीक है, तो इस तरह से जो है इसे हम समझ सकते हैं लिगैंड को, जिसका क्लासिफिकेशन हमने देखा. तो यहाँ पे अपने मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, नाउ दिस टाइम टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन. If you have any question, so you can